Okay. So Vikas, you're applying for IOCL. Yes, ma'am. Okay. So give a brief introduction of yourself. So first of all, thank you, ma'am, for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Vikas Kumar Mehta. I am from Hazaribagh. So I have done my bachelor's degree in electrical and electronics engineering from NITIE Nagaland. I have worked as a physics staff expert for 3 years in at Vedantu Innovations Private Limited, uh, helping students to excel in their studies. In my leisure time, I do exercises, terrace farming, which helps me to earn money. Thank you. Okay. So when did you complete your B.Tech? In 2019. 2019. Yes, So after that, what you have done? ma'am. I have worked as a physics staff expert at Vedantu Innovations Private Limited. Vedantu, ma'am. For Okay. 3 years, No. for, For how for many three years? years, for 3 years, ma'am. 3 years. Yes, So ma'am. you are still there or you have left the job? I have left the job, ma'am. During layoff, I was one of them, so I have left. Okay. Okay. So so why are you going in for IOCL now? Ma'am, because Ma'am, I am excited about the opportunity in IOCL because it is one of the leading PSU in oil and gas industry. IOCL's reputations for excellence and commitment to nation's growth and its role in driving the nation's energy security have inspired me. Also, its extensive presence will offer opportunity to work on a diverse project from power system optimization to renewable energy integration. So I believe joining ISRO would enable me to achieve my goal to become a well-rounded and accomplished. That's all. Why did you go in for MTech? Ma'am, in my college day only, I have decided for PSU. लेकिन मैम आफ्टर पासिंग इन 2019 मेरा गेट रैंक अच्छा नहीं था. Also, due to financial constraint, I decided to work as a physics out expert to help myself and my family financially. Now I am excited about the opportunity in PSU, where I can utilize my technical knowledge as well as my experience. How many divisions does IOCL have? Ma'am, it have approximately 7 to 8 divisions. Not I remember not exactly, but 7 to 8 divisions, ma'am. Okay. Can you name some divisions? Ma'am, refinery divisions, then marketing division, then research division there is, then there is pipeline division, then there is a exploration division. That's all. Who's the CMD of IOCL? Ma'am, Madhav, Srikant Madhav, Vedya. Okay. So Vikas, why should we take you? Ma'am, uh, I believe I would be an asset because of my diverse career journey. Being an electrical engineer, I have a deep understanding of the concept, which I can apply successfully to a technical project. And because of my experience in education sector, which has taught me the importance of fostering a culture of innovations, continuous learning and improvement. Also, I strengthen my ability to collaborate effectively in a team and communicate complex problems. I believe these are crucial traits which are essential to any organization. So that's all. Vikas, what are your weaknesses? So areas where I am actively working are is my public speaking skill.
Also, I get nervous while talking to people. So you have been in the education field. Can you tell me something about the new NEP? Ma'am, new NEP, yes, ma'am. Some of the uh, characteristic of the new NEP is childhood education, and that is integration of technology in education sector. Then, then there is a means continuous assessment process, and then teacher training. There are teacher training programs, and there is a vocational training concept. These are some of the characteristics of new NEP. Where do you see yourself after 5 years? Ma'am, in my in next 5 years, I will see myself as an integral part of this organization, uh, where leading and managing the technical projects. Also, I will enhance my expertise by joining the workshops and that training programs. Also, additionally, I see myself mentoring and leading young engineers, passing my knowledge and experiences for continuous growth of the organization. That's all. How do your friends describe you? Friends, friends describe me uh, शांत बंदा and honest man, like that only. Okay, so you have been in teaching. What do you think, like, if in your class you are teaching some students and one of the student is not listening to you, how would you make him listen to you? Okay, ma'am. Uh, First, I will definitely I will approach this situation with open communication, ma'am. I will first discuss the what are the problems relate. I will discuss with that student what are problems, why he is not listening. Then I will provide guidance to that student. And if the problem persists, then I will involve their parents. What are the challenges faced by that student? And if to find out the new means what we can say, to find out the new solution so that the student listens. That's all. Okay, so you are from electronics, electrical and electronics background. Yes, ma'am. What role can you help Indian Oil with? Like, what will be a role in Indian Ma'am, as electrical and electronics? ma'am, as an electrical engineering, there are many projects in IOCL because IOCL is a very big organization, and demand of electricity is very huge in this organization. So there is also there we have electrical engineering for power system optimization. Then we have uh, mm, there is a work of related to audits, and there is a concept of renewable energy integration in IOCL. So these areas where electrical engineers can help. Okay. Okay, Vikas, so let me give you a feedback to you. Main thing is, see, you start speaking, आपका pitch lower होता जाता है. जब तक आप एक एक वर्ड बोलते हैं, आपका शुरू में आप हायर बोल रहे हो तो उसके बाद वो वर्ड कहाँ गुम हो जाता है, पता नहीं लगता कि वो वर्ड क्या बोल रहे हो एग्जैक्टली आप. ठीक है. Uh, तो अगर इफ इट इज पॉसिबल, आपने इंग्लिश में बात करनी इंग्लिश में करो, हिंदी में करनी है हिंदी में करो आप. ठीक है, बट योर वट एवर यू आर स्पीकिंग शुड बी क्लियर. देन इन योर इंट्रोडक्शन, बीटेक आपने बताया है कि बीटेक आपने उसमें ना आपने कोई प्रोजेक्ट बताया, ना आपने कोई ट्रेनिंग बताई, जो आपने इंटर्नशिप वगैरह की है कुछ नहीं बताया. की है इंटर्नशिप आपने? yes, yes, ma'am. कहाँ की है? मैम मैंने ट्रेनिंग किया था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग.
कहाँ की थी? यह इसमें डीवीसी इन झारखंड। ईवीसी इन झारखंड। तो डू यू रिमेम्बर दैट? थोड़ा पता है उसके बारे में कि बिल्कुल कुछ नहीं आता? नहीं नहीं, पता है ना। पता है तो यू शुड मेंशन इट व्हेन यू आर गिविंग योर इंट्रोडक्शन। ठीक ओके, है। मीन्स वी हैव आई हैव टू ऐड वोकेशनल एडिशन, हाँ, वोकेशनल एंड एक्टिविटी प्लस के लिए। योर प्रोजेक्ट वर्क, बिकॉज आपके पास ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन आप बता रहे हो कि आपने टीचिंग किया, तो ऑब्वियसली मैंने आपसे टीचिंग के बारे में, एजुकेशन के बारे में ही पूछा, है ना? यस। बट टेक्निकल भी वो लोग आपसे पूछेंगे ना, तो टेक्निकल का थोड़ा सा तो आप कुछ छोड़ोगे ना उनके लिए बोलने के लिए। इफ यू आर यस यस। कंफर्टेबल विद, व्हाट वाज योर प्रोजेक्ट? व्हाट वाज योर बीटेक प्रोजेक्ट? मैम, माय बीटेक प्रोजेक्ट वाज रिलेटेड टू कंट्रोल सिस्टम। व्हाट मीन्स वर इन इट एग्जैक्टली? it was magnetic levitation. Project was related to magnetic levitation. अच्छा, मैग्नेटिक लेविटेशन, ओके। Okay. ओके, सो यू आर क्लियर अबाउट योर प्रोजेक्ट? I'm not clear about the project, but I am clear about the training program. So you just mention your training, don't mention the project. They will ask themselves if they want to, because you are mentioning that you have been working also as a as a teaching profession. So 3 years you have worked. So that will be more of, you should be clear with about the NEP and all. Because any, अभी आपने बहुत अच्छा जवाब नहीं दिया मुझे, आपने मेन चीजें तो उसकी बताई नहीं। ठीक है, इनोवेशन और ये सब तो है, रोट लर्निंग नहीं हो रही है, लेकिन मेन उसका क्या स्ट्रक्चर क्या है, 5+3+3+4 का, प्लस Okay, आपके okay. उसके मेन पिलर्स क्या है, क्वालिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, ऑल दैट स्टफ। ठीक तो है। मैम उसका हमें ब्रीफ में देना पड़ेगा क्या मैम? हाँ, ब्रीफ में, लेकिन जो मेन चीजें वो तो बोलोगे ना, कम से कम 2-3 चीजें तो बोलोगे ना। आपने बोला वो भी ठीक था, बट 2-3 थिंग्स यू विल सी ना, है ना? ओके ओके। और प्लस जो सिचुएशन आपको दी गई है, आप उसमें, ये उसमें भी हो सकता है कि इनोवेशन कैसे इंट्रोड्यूस किया आपने, कैसे करोगे आप क्लासेस में करके। ठीक है, तो उसमें आप, उसमें आपके इनोवेशंस दी, मतलब पूछा जा सकता है आपको, एजुकेशन के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है फिर। So once you ओके say that you have been teaching, so anything can be asked to you about education. Plus इंडियन ऑयल का आपको पता था कि है 7 8 नहीं, 7 है। ठीक है, तो जो भी डिविजन्स हैं तो आपको वो याद करनी है। डिविजन्स तो मेन चीज है, बाकी फिर कितनी रिफाइनरीज कहाँ कहाँ है, थोड़ा सा उसका भी आइडिया होना चाहिए। है तो बहुत जगह पे, लेकिन आउटसाइड इंडिया 2-4 कंट्रीज आप याद कर लो कहाँ कहाँ पर है उनकी, पाइपलाइंस कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या कहाँ कहाँ काम किया हुआ है। ठीक है, सारा नहीं याद करना, उसमें तो बहुत सारा है ना, लेकिन डिविजन तो 7 ही है। तो 7 डिविजन तो आपको पता होनी चाहिए ना कौन सी है। ठीक है। और वो ओके श्रीकांत माधव, उसके बाद वैद्य, इतनी देर बाद बोल रहे हो आप, हैं? तो वो याद आ रहा है आपको कि उसका सीएमडी कौन है। तो इसलिए थोड़ा सा, और मतलब आई एम टेलिंग यू, जैसे आप बोल रहे हो ना, और आपकी वॉइस बाद में कम हो जाती है, पता ही नहीं लगता वो पूरा वर्ड बोला क्या है। ठीक है, सो थोड़ा सा इन सब चीजों में इम्प्रूवमेंट कीजिए। और आपने फ्यूचर क्या देखते हो, ठीक है आप काम करोगे, तो फ्यूचर क्या देख रहे हो आप इस कंपनी में, यू शुड नो, वर्क ऑन दैट ऑल्सो, कि फ्यूचर क्या देख रहे हो आप यहाँ पे, 5 इयर्स के बाद क्या देख रहे हो, 10 इयर्स के बाद क्या, 15 इयर्स के बाद क्या देख रहे हो आप कंपनी में फ्यूचर। ठीक है। एंड देन ओके, ये तो आपने थोड़ा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का तो बता ही दिया था। थोड़ा एनईपी के बारे में और ये सब थोड़ा सा पढ़ो आप एजुकेशन के बारे में भी थोड़ा सा। ठीक है, जो भी आपने किया है, फाइन। ओके। अगर आपने फिजिक्स फिजिक्स पढ़ाई है आपने, यस मैम। तो फिजिक्स का अच्छे से कॉन्सेप्ट याद कर लेना सारे। वो तो आते ही होंगे जब पढ़ाया है तो। यस मैम, वो तो आते हैं लेकिन। हाँ, लेकिन फिजिक्स का वो अटेंड करना, मतलब टेक्निकल। ठीक है।